Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today, in the series of 12 Commerce CCSP SP portion, we'll be continuing with chapter number 1, issue of share. Before starting with today's topic, that is share forfeiture, let us recall what we have studied till now. We have started first with 3 provisions under which the company is eligible for issue of share, then 4 types of shares, then 4 ceilings of shares, types of classification of investors, then share application, process of share application, share allotment, process of share allotment, then irregular and illegal allotment of shares. Okay. Then in yesterday's topic we have discussed about share call, and today's our topic is share forfeiture. Now let us see what is share forfeiture. Shares on which call money is not received are forfeited by a company. Shares on which call money is not received is forfeited by the company. Forfeiture or forfeited means cancellation. Share forfeiture means cancelling down the shares. So forfeiture or forfeited means cancel. Okay. Now what is the meaning of share forfeiture? Amount forfeited on share on which call money not received is also known as share forfeiture. Okay, we discussed this earlier. Definition says share forfeiture is a process by which the directors of a company cancel the membership of shareholder and remove the name of shareholder from the list of members on non-receipt of call money as asked by the company in accordance with the statutory procedure laid down in the articles of company. सिंपल वे में इसको देखें तो ऐसा है कि जो शेयर कॉल किया है कंपनी ने, शेयर कॉल आस्क किया था कंपनी ने, अगर वो शेयर कॉल टाइम पे नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पाता, तो डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी उस नॉन पेमेंट ऑफ शेयर कॉल को देखते हुए जिस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने वो पे नहीं किया, उस शेयर होल्डर के शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं, एज वेल एज शेयर होल्डर्स की लिस्ट में से उनका नाम भी रिमूव कर सकते हैं, मेंबर्स एज अ मेंबर भी उनको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द कंपनी. ओके. शेयर forfeiture is a disciplinary action taken by the directors against non-payment articles of the company must authorize for forfeiture of share. शेयर forfeiture डायरेक्टर्स के द्वारा लिया गया एक एक्शन है, डिसिप्लिनरी एक्शन है, जो नॉन पेमेंट ऑफ शेयर के अगेंस्ट में होता है. बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आर्टिकल में ऐसा ऑथोराइज किया हुआ हो, मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको परमिशन देते हो शेयर फॉरफीचर के लिए. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर फॉर शेयर फॉरफीचर. शेयर फॉरफीचर की क्या प्रोसीजर देखते हैं. प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर इज गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. स्टेप ऑफ द प्रोसीजर आर एज अंडर. फर्स्ट स्टेप इज एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही फॉरफीचर होगा, उसका प्रोसेस भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दे रखा है. सो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर मींस हमने कल ही देखा था कि कॉल्स इन एरियर मींस those calls on which payment is not being made. Those are known as calls in arrears. A secretary prepare list of calls in arrear. Calls on share not paid. ऐसे शेयर्स जो पे नहीं हुए उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है. दैट लिस्ट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर. और ये लिस्ट कौन से बेसिस पे बनती है? ऑन द बेसिस ऑफ पे स्लिप्स सेंड बाय बैंक या रिसीव्ड फ्रॉम बैंक. जो बैंक ने हमें पे स्लिप भेजी थी, जिन जिन का पैसा डिपॉजिट हुआ है, तो जिस जिस शेयर होल्डर की पे स्लिप नहीं आती वो कॉल्स इन एरियर काउंट किए जाएंगे. क्लियर? देन आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ लिस्ट, प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वंस द लिस्ट ऑफ कॉल्स in arrear is prepared, it is presented before board of directors for further discussion and for taking decision on share forfeiture. लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट की जाती है
Now, board of directors have to discuss and decide what to do. मतलब they have discuss and take discussion, after discussion take decisions on share forfeiture. Board of directors. Okay. Then third is sending reminder to members. Reminders are sent to those members who have not paid. ऐसा नहीं है कि ब्लंटली एक बार आपने अगर आप फेल हो गए पेमेंट के लिए तो आपका शेयर कैंसिल हो जाएगा. नो, रिमाइंडर विल बी सेंड to the member to pay the to the member those who have not paid call money to pay the call money again within a prescribed time limit, and they are intimated to pay the amount of call in areas including interest within the time limit. Means जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उनको लिस्ट बनेगी, उनको प्रेजेंट किएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक और चांस देंगे उनको, उनको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट अगेन दी जाती है कि आपने इस टाइम में नहीं भरे, कोई प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे या भूल गए होंगे, कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन अब आप इस टाइम पीरियड के थ्रू विथ इंटरेस्ट आके कॉल्स इन एरिया पे कर दीजिए तो आपका शेयर कैंसिलेशन नहीं होगा. नेक्स्ट इज सेंडिंग फाइनल रिमाइंडर. इफ नो रिस्पॉन्स to first reminder is received, a final reminder is sent through register post and such members are intimated to pay the due amount including interest within 14 days of receipt of the final reminder. They are also warned of forfeiture of shares on failure in paying the due amount. फर्स्ट रिमाइंडर में भी अगर कोई पेमेंट नहीं करता है, कोई इग्नोर करता है, तो एक और रिमाइंडर भेजा जाता है विच इज नोन एज फाइनल रिमाइंडर. फाइनल रिमाइंडर इज सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट and strictly a time period of 14 days is given from the receipt of that letter or from the receipt of that reminder or notice. उस नोटिस में क्लियरली मेंशन होता है कि जिस डेट को आपको ये लेटर रिसीव हो रहा है उस डेट से 14 डेज के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दीजिए तो आपके शेयर्स आपके पास रहेंगे, अदरवाइज द शेयर्स विल गो इनटू द forfeiture section. ओके. Next is resolution of share forfeiture. Share of those members who do not pay the amount of call within 14 days are forfeited by passing a resolution. Do not pay the amount of call within 14 days of final reminders are for by passing a resolution in the meeting of board of directors. Next step is sending notice of share forfeiture. The secretary send notice of share forfeiture on the basis of resolution passed in the meeting of board of directors. A copy of resolution of share forfeiture is also enclosed the notice and the members are intimated to surrender the share to certificate to the company. Means as soon as board meeting of board of directors में resolution हो जाता है पास शेयर कैंसिलेशन के लिए, शेयर forfeiture के लिए, तो एक नोटिस भेजा जाता है शेयर होल्डर्स को. उसमें शेयर जो रेजोल्यूशन है वो एक उसकी एक कॉपी होती है कि हमने डिसाइड किया है कि शेयर कैंसिल करने वाले हैं, और सेकंड कॉपी होती है कि जो पहले नोटिस भेजे थे रिमाइंडर्स उनकी कॉपी होती है कि हमने आपको इतनी बार रिमाइंड करने का ट्राई किया. नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू सरेंडर द शेयर सर्टिफिकेट टू द company. Okay. And then issuing public notice means a secretary gave a public notice in the newspaper indicating serial numbers of shares forfeited so no transaction is carried out on such share. एक एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ता है, एक पब्लिक नोटिस भी देना पड़ता है. तो जो सेक्रेटरी है एक न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देंगे कि इतने नंबर के सीरियल नंबर्स के शेयर कैंसिल हो चुके हैं, तो उसके रिलेटेड अब कोई ट्रांजेक्शन्स होंगे नहीं. Clear? And next is making entries in the register of members. पब्लिक नोटिस के बाद सेक्रेटरी को जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें भी एंट्री करनी पड़ेगी शेयर फॉरफीचर करके. जो नेम्स ऑफ द मेंबर्स से जिनके शेयर कैंसिल हुए हैं उनकी लिस्ट में से नाम कैंसिल करना होगा, कैंसल फ्रॉम द लिस्ट. सो
this was the procedure of share forfeiture, starting from preparing list of calls in area, then presenting that list in the front of board of directors, then third is sending reminder to the members, fourth sending final reminders for 14 days, fifth passing a resolution in the meeting of board of directors, sixth sending notice of share forfeiture to the shareholders and asking them to surrender the share certificate, seventh issuing public notice, and eighth making changes in the register of members, taking out or cancelling their names from the list. So this is the procedure of share forfeiture. Now talking about the duties of secretary regarding share forfeiture. What are their duties? Talking about the duties of secretary, first is verifying that articles allowed, article provisions of article allowed regarding share forfeiture or not. Means checking up with articles of association, verifying provisions of articles of association. Next is preparing list of members who did not paid calls on share. Okay, so preparing a list of members. Third is sending reminders to defaulters members as per resolution of board of directors meeting. Sending reminders. Okay, after sending reminders, again sending final reminders to the members who have not paid calls in area even after sending first reminders. Okay, then holding meeting of board of directors to pass a resolution on share forfeiture on expiry of time limit of the final reminder. Meeting to pass a resolution. Meeting of board of directors. Next is sending notice to the members regarding share forfeiture. Notice. Sending notice to the member regarding share forfeiture. Next is public notice. Giving notice in the newspaper regarding cancellation or forfeiture of share. Next is making a note in register of members, cancelling the name of members. Changes in register of member. Changes in register of member. Next is getting the resolution regarding reissue of shares passed in the meeting of board of directors and informing new shareholders regarding allotment of shares and entering their name into the register of members. Okay. Uh, Ninth step says the for those shares which are cancelled, generally a decision is taken to reissue those shares. So ninth duty is to resolution, passing a resolution for reissue of the share, informing new shareholders about the allotment, entering their names in the register of member, and so on. क्लियर. सो क्या क्या ड्यूटीज है देखते हैं. बेसिकली जो प्रोसीजर था ऑलमोस्ट वो ही ड्यूटीज है. फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या है. सबसे पहले वेरीफाई करना है कि प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स जो है वो अलाउ करते हैं या नहीं करते शेयर फॉर फीचर के लिए. उसके बाद एक ऐसे शेयर होल्डर्स के मेंबर्स की लिस्ट बनाना जो जिन्होंने कॉल ऑन शेयर्स पे नहीं किया. ओके. थर्ड, जो लिस्ट बनी है उनको रिमाइंडर सेंड करना फॉर पेमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स. फोर्थ, जिन्होंने फर्स्ट रिमाइंडर के थ्रू भी पेमेंट नहीं किया उनको फाइनल रिमाइंडर भेजना. फिफ्थ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होल्ड कराना रेजोल्यूशन पास कराने के लिए, शेयर कैंसिलेशन या शेयर फॉरफीचर का रेजोल्यूशन पास कराने के लिए. सिक्स, जो शेयर होल्डर्स के जिन शेयर होल्डर्स के शेयर्स फॉरफीचर करने का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया है उनको नोटिस भेजना, सेंडिंग नोटिस अबाउट शेयर फॉरफीचर. सेवेंथ, न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस देना, पब्लिक नोटिस इश्यू करना रिगार्डिंग द शेयर फॉरफीचर विद सीरियल नंबर्स एंड ऑल. एट्थ, शेयर या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स उसमें शेयर होल्डर्स के नेम कैंसिल करना, एडिट करना. एंड नाइन्थ, जो शेयर कैंसिल हुए हैं उनको अगर री इश्यू करना है तो री इश्यू के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, रेजोल्यूशन पास करवाना, नए शेयर होल्डर्स के उसके बारे में इंफॉर्म करना और उनके जो नए शेयर होल्डर्स हैं उनके नेम मेंबरशिप रजिस्टर में एंटर करना. क्लियर. So these were the duties of secretary. Now next topic is effect of share forfeiture. Now talking about the effect of share forfeiture, what share cancellation have effect on the company's working. So let us see. Membership of member comes to an end from the date of resolution of the share forfeiture. जिस दिन से रेजोल्यूशन पास हुआ है उस दिन से
मेंबरशिप कम्स टू एन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। जिस दिन शेयर सरेंडर किया है उस दिन नहीं, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, उसी दिन से वो मेंबरशिप जो है पर्टिकुलर शेयर होल्डर की वो खत्म हो जाती है। मेंबरशिप कम्स टू एन एंड। सेकेंड, शेयर होल्डर लूजेस द अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन शेयर फोरफिटेड। शेयर फोरफिट, जो शेयर कैंसिल होने जा रहे हैं, जो शेयर कैंसिल हुए उसके ऊपर जितना भी पेमेंट आज तक किया है शेयर होल्डर ने, दैट ऑल गोज, शेयर होल्डर लूजेस ऑल दैट अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का शेयर है, अभी तक 8 रुपीज शेयर होल्डर ने पे कर दी है और लास्ट 2 रुपीज ही वो पे नहीं कर पाया, तो जो स्टार्टिंग के 8 रुपीज थे वो शेयर होल्डर लूज कर देगा। शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम दैट 8 रुपीज, ओके, लूजेस द अमाउंट ऑलरेडी पेड। शेयर ऑल्सो लूजेस द राइट टू रिसीव डिविडेंड। शेयर कैंसिल हो गया तो डिविडेंड राइट भी नहीं होगा, तो लूजेस द, shareholder loses the right to receive dividend also. As soon as the shares are forfeited, the company becomes owner of the amount paid by shareholder on share forfeited. The amount forfeited is credited by the company to a forfeited share account. After the reissue of share, the forfeited share account is closed. Okay. जैसे ही शेयर कैंसिल होते हैं, आज तक जो ओनर ने शेयर के अगेंस्ट पेमेंट किया है उस सब पेमेंट एक शेयर फोरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और कंपनी बिकम्स द ओनर फॉर दैट अमाउंट पेड। कंपनी बिकम्स द ओनर फॉर दैट अमाउंट पेड। और री इश्यू शेयर के, अगर शेयर का री इश्यू करना पड़ता है और री इश्यू का डिस्काउंट पे करना पड़ता है, तो जितना का डिस्काउंट किया वो कंपनी शेयर फोरफिटेड शेयर अकाउंट में से सेटल हो जाएगा। अगर नहीं किया तो सारा अकाउंट वो कंपनी के पास ही रहेगा। एंड देन द कंपनी बिकम्स ओनर ऑफ द शेयर फोरफिटेड एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डील विद सच शेयर एज दे डीम फिट। कंपनी ओनर बन जाती है अगेन शेयर फोरफिटेड की, जो शेयर कैंसिल है उनकी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको जैसे डील करना चाहे उससे कर सकते हैं। किसी को इश्यू करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना, रखना है उसके पास तो भी रख सकते हैं। ओके, ऑन forfeiture of share, share capital of the company is reduced and the company can reissue the share forfeited. शेयर फोरफिचर जब होता है तो शेयर कैपिटल जो होती है कंपनी की वो कम हो जाती है। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस एट द टाइम ऑफ शेयर फोरफिचर और कंपनी कैन री इश्यू शेयर्स फोरफिटेड। शेयर को वापस इश्यू करना हो, कैंसलेशन शेयर, कैंसल्ड शेयर को, तो कंपनी कर सकती है और वापस शेयर कैपिटल कंपनी की बढ़ जाएगी। Okay, so these were the effects of share forfeiture on shareholders, on companies, on board of directors. Clear? So that's all for today. Hope you guys have understood today's topic. Tomorrow we'll be talking about surrender of share. Till then, stay home, stay safe, happy learning.